Welcome to Jannat Learning's digital class. This video is for the Virtual University course Introduction to Computing, CS101 topic 228 MS Access, Creating Reports. We hope this is informative and helpful. Please subscribe to Jannat Learning if you haven't already. Your suggestions and comments are welcome. I will show you how to create a report in Microsoft Access. You can create a report by using the Microsoft Access table or by using Microsoft Access query for the report. Here we are creating a report with query output. Click on Menu option Create, and then Query Design button. Select the Employees table and click Add, and then select Department table and Add button, and then close this dialog. Select the fields names Employee ID, first name, last name, department name, and salary. When we have finalized these fields or columns name, then run the query, get the output, and save the query with name. Where is Save button? Save button is here, click it. Click on the option Create Report and then Report. By default, we get this layout view, design, arrange format, and page setup. You see the name of the report saved in the Reports tab. जन्नत लर्निंग डिजिटल क्लास में शिरकत का शुक्रिया। हमारा मिशन आपको तालीमी कामयाबी में मदद करना, आपके तालीमी सफ़र को हमवार और खुशगवार बनाना और आज के लिए जामे हल, मददगार वसाइल और माहिराना रहनुमाई फराहम करना है। हमारे कंटेंट में स्टडी की तजावीज़, इम्तिहान की तैयारी, इसकी हिकमत अमली, कोर्स के जायज़ा और बहुत कुछ शामिल है। सीखने वालों की हौसला अफजाई के लिए हमारी कम्युनिटी में शामिल हूँ। आइए मिलकर तालीमी जिद्दत की दुनिया को फतह करें। बाकायदा अपडेट्स और कीमती इंसाइट के लिए जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें।